Next lecture on transition and inner transition elements. Then in this section we will discuss about inner transition elements, or it is also known as F block elements. अब ये जो F block elements हैं इसमें लैंथेनॉइड्स मिलेंगे हमको और एक्टिनॉइड्स मिलेंगे. We have to study lanthanide and actinoids. Now, elements whose f orbitals get filled up by electrons are called f block elements, and these elements are placed separately at the bottom of the periodic table. They are a subset of 6th and 7th periods. Then the lanthanoids are characterized by gradual filling of 4f and actinoids by 5f orbitals. Now, these are different properties of F block elements. These metals are soft with moderate densities of about 7 gram per centimeter cube. They have high melting and boiling points. Melting point is nearly equal to 1000 degrees C. Boiling point is nearly equal to 3000 degrees C. Lanthanoids in the metallic state are very reactive and resemble alkali and alkaline earth metals. They react with water to give the metal hydroxide and hydrogen gas. मेटल है, इनका रिएक्शन यहाँ पे वाटर के साथ होगा. Then there is formation of metal hydroxide along with liberation of hydrogen gas. The common oxidation state for lanthanoid is +3, and it shows +2 oxidation state also. They all form stable oxides of the type M2O3. Eu +2 and Yb +2 are the most stable metal ions. Higher oxidation states are unusual. Higher oxidation states are unusual for lanthanoids, with the only exception of cerium, which forms a stable +4 species. ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, इसका मतलब उस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स बनेंगे दोज कंपाउंड्स विल बी स्टेबल. सॉरी. Lanthanoids have lower heat of atomization than transition metals. Europium and ytterbium have the lowest enthalpies of vaporization and largest atomic radii. Lanthanides form hydroxides of this type, LnOH thrice, and these are ionic and basic. Since ionic size decreases, the basicity of hydroxides decreases. LaOH thrice is the strongest base and LuOH thrice is the weakest base. Then lanthanoids react with nitrogen and halogens to give nitrides and halides. Nitrides are of the type of Ln and halides are LnX3. When lanthanoids are heated at elevated temperatures with carbon, the carbides are formed. In +3 oxidation state, many of lanthanides are colored, mostly green, pink and yellow, and this is because of electronic transition among the f orbitals. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनॉइड्स. लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टीज़ देखना है और हमको एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ देखना है. इसमें लैंथेनाइड्स का जो कलर है सिल्वरी वाइट कलर मिलेगा, मॉडरेट डेंसिटी मिलेगी हमको. देन कलर एंड ब्राइटनेस रिड्यूसेस ऑन एक्सपोजर टू एयर. लैंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Promethium, it is only except promethium, all are non-radioactive in nature. The atomic and ionic radii decreases. Atomic and ionic radii decrease from lanthanum to lutetium, and this is known as lanthanide contraction. Binding of water is common, such that H2O is often found in products when isolated from aqueous solutions. कोऑर्डिनेशन नंबर हमको मिलेगा ग्रेटर देन 6, टिपिकली 8, 9 up to 12. कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी फाउंड. The lanthanides are strongly paramagnetic.
पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. गैडोलिनियम बिकम्स फेरोमैग्नेटिक बिलो 16 डिग्री C. The other heavier lanthanides, these are heavier lanthanides that can become ferromagnetic at much lower temperatures. Magnetic and optical properties are largely independent of environment. Now, electronic configuration of lanthanoids. These are this table shows electronic configuration of lanthanoids. General electronic configuration is like this: xenon 4f0 to 14, 5d0 to 2, 6s2. ये जो गैप है यहाँ पे, यू हैव टू फिल ऑल दीज गैप्स. नोट्स आपको पढ़ना है और उसमें से फिर आपको इस गैप को फिल करना रहेगा. ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एंड इट इज़ द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आपको ये सब फिल करना रहेगा. दीज आर द एटॉमिक रेडाई एंड दीज आर द आयोनिक रेडाई. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन in which 2 electrons of S subshell and 1 electron from D or F subshell are removed. And besides these, some lanthanides show oxidation state +2 and +4. They are formed in case of F0, F7, F14 configurations of resulting ions. एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे Ce+4, इसमें F0 कॉन्फ़िगरेशन, Eu+2 एंड Tb+4, इसमें F7 कॉन्फ़िगरेशन, Yb+2 में हमको F14 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. देन नेक्स्ट इज कलर एंड स्पेक्ट्रा. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो यहाँ पे हमको कलर मिलेगा. सम ट्राइवैलेंट आयंस आर कलर्ड इन सॉलिड एज वेल एज इन solution. The color of lanthanoid ion is due to FF transition, which corresponds to energy in the visible region of electromagnetic spectrum. The color of ions having NF electrons is about the same as those having 14 - NF electrons. यहाँ पे ये टेबल मिल रहा है. यहाँ पे देखिए, यहाँ ये भी ग्रीन कलर और यहाँ पे भी ग्रीन कलर है, 4f2 और यहाँ पे ये 4f12. ये NF इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 12 हैं और यहाँ पे 14 - N यहाँ पे हम करेंगे तो हमको ये 12 मिलेगा. ठीक है. सो इट इज़ द N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर, ये दोनों जो आयंस हैं, दीज टू आर ग्रीन इन कलर एंड दीज टू आयंस आर पिंक इन कलर. ठीक है. 14 - N यहाँ पे हम कर रहे हैं और यहाँ पे NF इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 11, ये भी 11. Now, atomic and ionic radii. As we move along the lanthanide series, there is a decrease in atomic and ionic radii. ये जो decrease हो रहा है, it is known as lanthanoid contraction. And as we move from one element to another, the nuclear charge increases by 1 unit and 1 electron is added. The new electrons are added to the same inner 4f subshell with increasing atomic number and nuclear charge. The effective nuclear charge experienced by each 4f electrons increases. As a result, the whole of 4f electron shell contracts at each successive element. So it is known as the lanthanide contraction. Next है मैग्नेटिक मोमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने देखा था मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंजेस, दिस वैल्यू ऑल्सो चेंजेस. ठीक है. सो दिस टेबल शोज द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंथेनॉइड्स. It is about the ionization enthalpy. Ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? The energy required to remove most loosely bound electron from isolated gaseous atom.
It is first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third ionization enthalpy. It is less than second and it is less than third ionization enthalpy. टेबल में ऐसे ही हमको दिख रहा है. So it is about the ionization enthalpy. Now, applications of lanthanides. Lanthanide compounds are present in every household. टेलीविज़न, कलर टेलीविज़न में जो ट्यूब्स रहते हैं उसमें लैंथेनाइड्स यूज़ होते हैं. When electrons are bombarded on certain mixed lanthanoid compounds, they emit visible light over a small wavelength range. Therefore, the inside surface of a television tube or computer monitor is coated with tiny patches of 3 different lanthanide compositions to give 3 colors that make the colored image. ये सब अलग अलग लैंथेनाइड्स हैं और ये उनके कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं. एग्जाम्पल है यहाँ पे. इट इज़ द एग्जाम्पल मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ यूरोपियम एंड इटर्बियम. ये इट इज़ द मिक्स्ड ऑक्साइड releases an intense red color when bombarded with high energy electrons. The optoelectronics applications use lanthanide ions as active ions in luminescent materials. The most notable application is the most notable application ND YAG neodymium doped yttrium aluminium garnet erbium doped fiber amplifiers are significant devices in the optical fiber communication systems. Lanthanides are used in hybrid cars, superconductors and permanent magnets. So these are different applications of lanthanoids. Thank you.